जो नीति आयोग है, Yes, sir. इसका जो है वो इस प्लानिंग से क्या रिश्ता है? Sir, I'm not aware. Maharaja Ranjit Singh did the crown ceremony of the Maharaja Gulab Singh Ji in the Jayapura Ghat एज महाराजा और एज राजा? as Maharaja. राजा है। आपने कितने रिसोर्सेज जनरेट करके दिए सेंटर को? अमाउंट में क्या है, क्या खाते हो, क्या करते हो? Yes, sir. It should be open or it should be private to the person. Urvi, Yes, sir. please introduce yourself. Sir, I'm Urvi Langar from Akhnoor. So I've done my graduation in BCom from GCW College Parade and my post-graduation from University of Jammu. Suppose that I qualified for the NET-JRF exam. However, I did apply for the PhD program as well, but around the same timing, the notification for this recruitment was notified and I decided to prepare for this exam. किसके लिए अप्लाई किया आपने पीएससी में? लेक्चर के असिस्टेंट प्रोफेसर? No, sir, Assistant Director. अच्छा, ओके। नहीं, आपने नेट भी क्वालिफाई किया ना? Yes, sir. नेट क्वालिफाई करने के बाद कोई एडवर्टीजमेंट हुई नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर की? नहीं। No, sir, I'm saying when I qualified the NET-JRF, post that I applied for the PhD program. ओके। But I didn't join it as around the same time the notification for the assistant director was notified and I decided to prepare for it. You are not presently engaged in any जॉब? job. No, sir, I started preparing for it. And sir, So, apart from my academics, sir, my father is a businessman and mother is a homemaker. And my अखनूर hobbies में ही है are... क्या Yes, sir. शॉप वगैरह? Yes, sir. And so my hobbies are Raj Yoga meditation and strength training. And my optionals for the exam were office management and principles of business management. प्रिंसिपल्स ऑफिस मैनेजमेंट? Yes, sir. ऑफिस मैनेजमेंट में क्या कंप्यूटर जो है वो ऑटोमेशन है क्या? सर तो ऑफिस मैनेजमेंट में सारा डाटा कैसे जितना भी द रिसीविंग ऑफ द डाटा, द कॉरेस्पॉन्डेंस, द मैनेजिंग, द हैंडलिंग ऑफ द डाटा टिल इट इज यूजफुल, इट्स अप्लाइंग इट टिल इट इज लीडिंग टू द डिसीजन मेकिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इट इज कॉल्ड द नर्व सेंटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ना सारा डाटा जितना भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का इज कलेक्टेड देयर, segregated into multiple departments also as requirement, and further the decisions are taken based on the facts and the records. अभी भी आप अखनूर में रहते हो? Yes, sir. वहाँ पे एक मंदिर है जयपुरा, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है? Maharaja Ranjit Singh did the crown ceremony of the Maharaja Gulab Singh Ji in the Jayapura Ghat एज महाराजा और एज राजा? as Maharaja. Sorry, sir. जहाँ पे थोड़ा सा राजा है, As Raja Gulab Singh. Okay. महाराजा नहीं। महाराजा in which year? Sir, I'm unable to recall the चलो। year. चलो ठीक है, जयपुरा बड़ी अच्छी जगह है। तो वो टेम्पल है ना मशहूर। दूसरा क्या है जो बड़ा बड़ा टेम्पल है? Sir, Kameshwar Temple. कामेश्वर टेम्पल। Yes, sir, it is 1000 years old. The Buddhist site is also there. So apart from that, there are the Manda is the northernmost site for the Indus Valley civilization. There are remains for the there are remains like beads, terracotta pots तो उसके out there. ये इसके रिवर के पहले तो अंबारा भी है ना? Yes, sir, the Buddhist remains है वहाँ पे. तो आप मुझे ये बताइए कि ये जिसके लिए आपने अप्लाई किया है जॉब के लिए, Yes, इसमें sir. काम क्या होगा वहाँ पे और हाउ आर यू सूटेबल फॉर दिस? Sir, इसमें the role for the job is basically planning and assisting the district collector regarding the development and growth of the region, making different plans, evaluating them, preparing monthly MPRs, monthly progress reports, evaluating them, and also coordinating them with the multiple departments as required. This is the basic job role that one has to do. And sir, I have been learning in management, sir, throughout my academics. I have been learning the planning, organizing, coordination, and directing of the different things. Sir, academically, I think, sir, I have been learning this throughout my academics. Sir, apart from the academics, sir, I'm disciplined and consistent, I would say. ओके। ये जो J&K में जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है ना, इसकी Yes, थोड़ा बहुत कोई हिस्ट्री के बारे में को पता है आपको? At one point of time, there used to be an administration which used to be called single line administration. Any idea about that? No, sir, I'm unable to recall exactly.
तो मैं आपको ये बता दूं कि सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन में प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है वो लीड रोल में हुआ करता था, बिकॉज डिप्टी कमिश्नर यूज्ड टू बी द मेजर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स विद इन द डिस्ट्रिक्ट, यानी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री भी वही, डायरेक्टर एजुकेशन भी वही, और उसको कोऑर्डिनेट कौन करता था? प्लानिंग डिपार्टमेंट करता था। खैर, तो आप ये मुझे बताइए कि ये जो नीति आयोग है, यस सर। इसका जो है वो इस प्लानिंग से क्या रिश्ता है, और इससे पहले वाला जो एक कमीशन होता था प्लानिंग कमीशन, Yes, sir. उसमें और उसमें क्या फ़र्क है? क्या थिंग्स हैव गॉट बेटर वर्स आफ्टर इट बिकेम ए नीति आयोग और व्हाट? Yes, sir. So नीति आयोग, sir, it was created in 2015. रिप्लेस कर दिया था प्लानिंग कमीशन को, एंड सर नीति आयोग का मेन काम है प्लानिंग एंड डिजाइनिंग इनपुट्स फॉर द गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट. It tends to plan and monitor as well. जितने भी plans बना रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल द विकसित भारत द 2047 या सर द aspirational district program, ऐसे plans for the overall growth of the development of the economy. Sir, in case of इसमें सर नीति आयोग में there is a bottoms up approach. They are integrating plans from the village level, taking into consideration कि जो growth के benefits हैं, they are at least reaching every department, every section of the society, so that it is more of an inclusive growth. And the role of states is more, sir, in the planning thing in the Niti Aayog. Sir, whereas in Planning Commission somewhere it was a top-down approach. इसमें there was less or no role of the state. प्लानिंग कमीशन में जो है ना सेंटर से टॉप डाउन अप्रोच थी, तो वो बांट के देते कि जम्मू एंड कश्मीर को इतना मिलेगा प्लान में, फलां को इतना मिलेगा, उसको इतना मिलेगा, दे वुड डिसाइड। वो उस हिसाब से नहीं होता था कि आपने कितने रिसोर्सेज जनरेट करके दिए सेंटर को, उस हिसाब से नहीं था। अब नीति आयोग में शुरू में ये क्रिटिसिज्म आया, तो उन्होंने कहा कि ये कहते कि जी कि जितनी कमाई करोगे उतना हिस्सा वापस मिलेगा। क्या ये करेक्ट है? Sir, I'm not aware. सर, तो आपने कॉमर्स की पढ़ाई की, राइट? Yes, sir. लेट्स अज्यूम आपको किसी एक लेमन इंसान को समझाओ कि कॉमर्स क्या है, ये डिसिप्लिन ऑफ कॉमर्स क्या है, सो हाउ वुड यू एक्सप्लेन? So, commerce है buying and selling of goods in simple terms till the good is produced and it is reached to the, मतलब वो जब तक एक कंज्यूमर के पास पहुंचा नहीं है, वो that is commerce for a price. ओके, सो कॉमर्स एज अ डिसिप्लिन क्या चीज So, commerce has a discipline and what all और branches? सब्जेक्ट मतलब? So, it includes management, so different account making, behavioral economics, statistics, a brief introduction of the different subjects. Commerce it includes every aspect of what a business needs, from financial sources, from human resources, from maintaining the current scenario, as in they are maintaining the environmental aspect, taking into consideration that as well. राइट। आपने अर्थशास्त्र के बारे में सुना? अर्थशास्त्र कोटेलिया, Yes, sir. पुरुषार्थ, Yes. तो उन सब में एक सेंट्रल थीम है, अर्थ मीन कॉमर्स। कॉमर्स जो एक सेंट्रल थीम रहेगा फॉर ऑल द जनरेशन, जब तक मटेरियल का क्रेज है, पैसे का क्रेज है, तो सेंटर हमेशा कॉमर्स रहेगा। इतनी इम्पोर्टेंस होने के बावजूद भी व्हाई देयर इज अ क्रेज फॉर साइंस, ऐसी परसेप्शन है कि कॉमर्स में थोड़ा वीकर स्टूडेंट है, आर्ट्स वालों से थोड़ा ज़्यादा वीकर है, द ब्रिलियंट द क्रीम ऑप्ट फॉर साइंस। सेंट्रल थीम कॉमर्स है, देन व्हाई द क्रेज फॉर साइंस? Sir, I am not able to understand. However, I wouldn't say that commerce doesn't follow any scientific approaches. There are scientific as well as art, creative use of commerce at times. Commerce में scientific, there are theories and principles that have to be followed as it is, considering the assumptions and exceptions. And creativity आ जाती है उसमें कि there is use of the different जो भी science और theories हैं according to the different nature of the problems. What makes you suitable candidate? Sorry, sir. What makes you a suitable candidate for the job? Sir, as the role demands, the planning formulation and the monitoring and coordinating. Sir, with time I did realize that I have an interest, I am drawn towards strategic roles. I have been academically learning about it. And secondly, sir, I would say I am disciplined and consistent, and I can follow a routine and
Sir, I'm emotionally intelligent. Sir, and I believe everything at the end of the day comes down to the managing the human resources. Ultimately, they are the ones who are planning, evaluating, and making things work on practically on the ground. So you are studying planning and management for a while now. So if you plan something like Yes. there can at times uncertain circumstances to planning successful now. जैसे हमारा कुछ डेवलपमेंट का प्लान है now Trump is doing some Yes, sir. difficult things. What can be some other challenges apart from integration challenges keep planning successful now? And how you be prepared for that? So planning successful नहीं है तो I believe there are always the contingency plans ready to handle that. पर अगर फिर भी they're not there तो सर वो the risks factors are always there जो there are chances कि जो भी हमने plan किया है there will be variations in that. Accordingly, sir, the flexible home plans अगर तो their changes can be allotted. So, like for example, if you give me a moment, I'll think about the example. So, for example, the recent example I can recall right now is my father is a businessman and our shop is in Akhnur. So, one of the shop owners they decided to do the sale that wasn't even that wasn't planned and it was overnight and it was a due to social media the videos got a high level of reach, like there were lakhs of views to that. And the अखनूर मार्केट इज़ रियली स्मॉल, एकदम छोटा सा मार्केट है तो दे वो वहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं थी इन द मार्केट एंड हम द रेस्ट ऑफ द मार्केट एंड इंक्लूडिंग आर्स वी वर नॉट रेडी टू हैंडल सच क्राउड. सर उस टाइम पे प्लानिंग ये थी कि वी ऑल्सो यूज द सेल्स टैक्टिक्स और हमने उस टाइम पे काफ़ी सेल्स के हिसाब से चेंजेस कर दिए प्राइसेस को. और क्योंकि हमारी शॉप पहले थी तो वी वर हैविंग द फर्स्ट मूवर बेनिफिट एज वेल, हमारी फर्स्ट थी उनकी बाद में थी तो वी यूज दैट एंड द प्लान दैट वाज कि जो भी लास्ट सीजन का सामान था दैट वाज ऑल द इन्वेंट्री दैट वाज कि उसको 50% 40% ऑफ करके दैट वाज ऑल क्लियर. Many of the boys are committing suicide, false allegations, है ना? यस सर. Women empowerment के नाम पे there is less protection for boys. What is true meaning of women emancipation for you? So women emancipation. Yeah, women empowerment. Sir, empowering one to take decisions financially, educationally, having the equal rights and opportunities. So that is it. So having equal rights and opportunities financially and the responsibilities. GST reduction in the rates are you might be knowing that there is a change Yes, sir. in rates of the GST. Whether it will bring any change in socio-economic of the people. So what changes will it bring? Sir, it will increase the income in the hands of the people as now there is only two slab tax rate, 5% and 18%. Whether it will increase this GST collection. Sir, I'm unable to recall exactly in the figures, but there will be certain loss that will have to be borne by the government, as I can remember. But in the longer term, sir, it will be beneficial. The economic activities will be triggered. For example, there is 5% slab and the 18% slab. In the 5% slab, the kitchen goods, the household goods, the medicines, the vehicles, or the car, जैसे कि इनके prices काफी. Why the demand will increase? Yes, sir. When the income will be in the hands of the people, so hopefully the demand. The income is with the people. You don't think that income is with the people. Very high rates. When have you noticed any change at this time? Yes, so there is also 12. The reduction of the price. So Whether it is enforced, GST reductions have been changes have been enforced or it is yet to be. Sir, if I'm able to guess rightly, so the hotel prices have reduced. The textiles mein, so there have been. There is a general conception that it is decreased. There is announcement also, but in fact, it is made applicable reduction. So since 21 September, sir, if I remember correctly, since 21 September 20. It is now made applicable. enforceable. Yes, sir. Have you noticed any change in your tax? So in taxes, sir. Any reduction in milk price, any reduction in the items, Sir, or that it will take time to.
So for certain items, I believe. by the adaptive, it will take some time for adaptability. So certain items are such as I was reading about a shampoo. So उस पे भी सर 5% हो गया. अभी छोड़िए इसको. ये क्या है? But you see, एक data security, इनके personal data security. Yes sir. By then it should be made open to government, everybody. So data. क्या आपका take on? मतलब data security for your personal account में क्या है, क्या खाते हो, क्या करते हो, कहाँ से? Yes sir. It should be open or it should be private to the person. Sir it should. Individual. Sir. आप क्या कहते हो? रिस्पेक्ट क्या सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट है और कौन सी जजमेंट? Sir, I haven't read the judgment. I'm sorry. I'll read it on it. KS Pottaswamy, he was a Supreme Court judge. Okay. Everybody knows. थोड़ा सा इधर भी आएगा ना, संविधान भी हमारा है. Yes sir. तो ये I'll read तो about उसमें it. यही डाटा सिक्योरिटी, क्योंकि आपका उसके साथ भी है स्टैटिस्टिकल, तो उसके साथ भी है कि इकोनॉमिक आपका खाता सारा देखेंगे. I'll read वो about भी it. इसमें भी थोड़ा सा ओवर सर. ठीक है, काफ़ी अच्छा है आपका, प्रेजेंटेशन अच्छी है, आपका बोलचाल अच्छा है, बॉडी लैंग्वेज इज गुड.